Good morning. Dear, please inform your classmates to join as soon as possible so we can start. I'm waiting for them. Please inform them to join. Hinal, by the time, let's go with the disclaimer. By the time others join, let's continue with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material, may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the videos will be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Please be online. I am sharing the slides.
Today we have to start with the above average return model. We have two models in that. Let me show you. Okay, now apart from this syllabus, uh, I would like to ask you a few questions. Uh, Hinel, the first question is for you. To be very honestly, I am expecting honest answers. Throughout last few sessions, whatever the things we have studied, are you able to understand it? आपको समझ में आया है जो अब तक हमने समझाया है, हमने डिस्कस किया है, आपको समझ में आया है? Very honestly, okay. Pratham has left. Okay. Devangi and Pragati, same question for you. अब तक जो भी मैंने समझाया है, यहाँ पे जितने भी सेशंस हमारे कंडक्ट हुए हैं, everything is clear to you? Okay, good. Amish, what are the examples I have shared? कई सारे examples Sir, मैंने आपको दिए. Yes, Devangi, sir, this is our first lecture. your first lecture. No, sir. In our class, your lecture is first. No, no, dear. This is not my first session. I have already conducted 3 sessions. 3 plus. You might have missed certain sessions. Okay, sir. This is not the first session. Almost 4 plus, I need to check out my records. 4 plus sessions I have conducted, and this is the 5th one, if I'm not wrong. I will check out the records. I'm going to upload the attendance and videos very soon. So I think this might be your first session, Devangi. Amish, यस सर. बेटा तुमने तो मेरे पहले के सेशंस अटेंड किए हैं ना? यस हाँ सर. सर आपने लिंक अपलोड की है. Your voice is cracking, dear. आपने सर लिंक अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम में 5 सेशन की. हाँ हाँ हाँ, done done. Yeah, great. यस सर. So what my intention is, because out of 60 plus, only 4 are present. So if you find any difficulties in explanation, in material, in language, or anything else, then please let me know. If any lacking is there from either of the side, you please feel free to share it with me. Because I expect कि भाई 60-70 लोगों का क्लास है तो एटलीस्ट उसमें से 40-50 तो बच्चे आने ही चाहिए. But you are very less in number. If you have any problems from your side regarding some network issues and something like that, some battery issue, timing issues, then please at least let me know. Let me make aware about that, so we can work out for you. सिलेबस चल रहा है बेटा, ऑलमोस्ट हाफ मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो गया है. सो अभी 2-3 सेशंस और होंगे तो 8-10 सेशन में पहला मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा. इफ बेसिक इज नॉट क्लियर टू, तो ये सब्जेक्ट आपको फिर बाद में थोड़ा टफ लगेगा. टफ तो मैं नहीं होने दूंगा, सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. अब तो ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो गए, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट मॉड्यूल, जब मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद भी, तो फील फ्री टू मीट मी.
I will explain each and everything. So what my basic concern is, out of 60 70 students, only 6 or 7 has attended. If you have any doubts, any problem, any concern, any issues, I am available. You can consider me as your friend, philosopher, and guide. In the other subject also, the attendance is quite less. Quite less. No doubt, I am not your class coordinator. But then also, as a as a well-wisher, I am sharing these facts. So what we can do so that you guys can attend the sessions? I can understand that this is the online mode, so definitely it will make a huge difference between online and offline. But this is the way, and now we have offline classes too. So please feel free. If you feel that this is the public platform and you should not share anything because of certain privacy issues, you can mail me. You do have my mail ID, sunilbhai.mushru. बाकी का जो है पीछे का सेम रहेगा. If you even feel that mail जो है वो थोड़ा authenticated है and something like formal communication है, you can even text me, you can even call me, you can even message me on on my number. This is my number. You already have my number in the WhatsApp group. So what my clear concern is कि आप लेक्चर अटेंड करो, आप थोड़ा सेशन में इंटरेक्टिव हो जाओ. जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ आप उसका आंसर दीजिए, उसमें थोड़ा अपना इंटरेस्ट शो कीजिए. थोड़ा आप भी इंटरेक्टिव रहेंगे तो हम लोगों को भी मजा आएगा. हम भी 2 क्वेश्चंस आपको ज्यादा करेंगे. एंड जितना क्वेश्चन आंसर होगा ना गाइस, लिसन केयरफुली, जितना ज्यादा क्वेश्चन आंसर होगा ना, वो लेक्चर उतना ही हेल्दी रहेगा. ये वन वे स्पीकिंग है तो उसमें शायद आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा. 2 वे स्पीकिंग हो जाएगा, इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा, तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू एंजॉय. एंड इवन आई वुड लव टू ऐड समथिंग न्यू ड्यूरिंग द सेशंस, क्योंकि आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सर्टेन एनवायरनमेंट में से ही मैं लेके आपको पढ़ा रहा हूँ. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी बन रहा है, मेरा कॉर्पोरेट का 7 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, मेरा बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है, मैं उसी में से आपको पढ़ा रहा हूँ. मैं वही सब चीजें प्रैक्टिकली लाइव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. अब उसमें आपको कोई क्वेश्चन आता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि वहां पे और कोई नई चीज सडनली मुझे स्ट्राइक हो जाए और वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं. So it's always about active learning process. I hope you guys are getting my point. ये शायद आपको भाषण ना लग रहा हो कि ये क्या सर ने स्टार्ट कर दिया, सुबह सुबह में भाषण देने लग गए. I am sharing because I do have concern for you. I hope you guys are getting my point. Guys, are you getting my point? What exactly I'm trying to share? So please be interactive. Please inform your classmates to join classes. यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करेंगे कुछ ना कुछ उसको मिलेगा. अभी मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट क्लासेस शुड बी जोवियल, एकदम लाइव होने चाहिए. बट आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना मैं भी उसमें ऐड ऑन करूंगा. आप 10% ऐड करोगे, मैं 30% ऐड करूंगा. दैट्स माई एश्योरिटी, दैट्स माई गारंटी. बट एटलीस्ट शो योर कंसर्न, शो इंटरेस्ट फ्रॉम योर साइड. वो मुझे भी अच्छा लगेगा. तो मुझे भी ऐसा होगा कि नहीं चलो भाई, मैं ऐसे ही बोल नहीं रहा हूँ. Someone is there who is listening to me. Someone is there where my words matters.
Because of my knowledge, because of my sharing, someone is gaining 0.00001%, एंड वो हमें अच्छा लगता है, हमारी जो फ्रेटर्निटी है उसको वो अच्छा लगता है. आई डू हैव लोट्स ऑफ स्टोरीज. मैं कई सारी स्टोरीज मेरे पास है, कई सारे वीडियोस मेरे पास है. आई एक्सपेक्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सुने, उसको देखें, उसको समझे. You guys won't believe, but to be very honestly and genuinely, I am sharing that I am in academics since last 10 years, and अब तक 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने उसके स्टार्टअप्स करवाया है, उसका खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करवाया है. छोटा बड़ा बिजनेस कोई भी हो, छोटा बड़ा बिजनेस इज बिजनेस, स्टार्टअप इज स्टार्टअप, वो मैंने करवाया बिकॉज आई एम ऑलरेडी देयर इन बिजनेस ऑल्सो. सो मेरे पास जो भी है, इन इन आवर टाइम nobody was there to guide us, but now we are here to guide you. So take optimum advantage of these things. Anyway, guys, I wanted to start with new point, but still the number is very less, and this point will be there in your exam. Above average written, two model, IO model, industrial organization model, and resource based model. ओके, अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं. आप लोगों ने मेकिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री देखा है? रिलायंस इंडस्ट्री पूरी किस हिसाब से बनी हो? जामनगर मोटी खावड़ी में जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो काफ़ी बड़ी जगह में फैली हुई है, क्या आप लोगों ने वो देखा है? उसका मेकिंग कैसे हुआ है, किस हिसाब से वो पूरी कंस्ट्रक्ट हुई थी, व्हाट वाज द फाउंडिंग फिलोसॉफी एंड ऑल? ओके, आप लोगों को देखना है वो. यू गाइस वांट टू सी दैट? ग्रेट. सो बी ऑनलाइन. अभी यहाँ पे मैं पीपीटी मेरा जो है वो स्टॉप कर देता हूँ. मैं आपको दिखाता हूँ हाउ रिलायंस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टेड, इंस्टॉल्ड एंड गेट एक्टिव. वीडियो थोड़ा लंबा है, बट आई एश्योर यू कि वो आपको फेड अप नहीं करेगा. काफ़ी अच्छा वीडियो है. आई डू हैव रियली वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ सर्टेन वीडियोस जो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगा. आपको भी मज़ा आएगा. मेरा सब्जेक्ट जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट बुक्स के ऊपर तो डिपेंड है, नो डाउट, बट इसमें मेरे पास ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं अपार्ट फ्रॉम बुक आप लोगों को दे सकता हूँ, जो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सकती है. नॉलेज इज द करेंसी फॉर 21st सेंचुरी. ये पूरा एरा जो है, पूरा कटिंग थ्रोट एज जो है वो चेंज हो रहा है, रीट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरा. आज रिलायंस इंडस्ट्री जो एक ऊंचाइयों पे है, उसके जो ओनर है, चेयरमैन है, आप जो भी बोलो उसको, प्लीज बी ऑनलाइन. मुकेश धीरूभाई अंबानी, उसने पब्लिकली ऐसा बोला कि ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज सनसेट इंडस्ट्री, आईटी एंड टेक्नोलॉजी इज सनराइज इंडस्ट्री. ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है कि उसने पब्लिकली बोला. इसकी इम्पैक्ट क्या आ सकती है? सऊदी अरामको ने 20% स्टेक ले लिया, एंड मैनी मोर. आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मालूम होगी, अगर नहीं है तो आप थोड़ा अपना रीडिंग बढ़ाइए, न्यूज़पेपर रीड कीजिए, न्यूज़ हंट कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आती है, आप उसको रीड कीजिए, उसमें एक्टिव रहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन दैट यू गाइज
attract or that you guys grab. जितना ज्यादा, ये शायद आपको ऐसा लगेगा कि सर अभी खाली पीली बात कर रहे हैं, बट नहीं, दिस इज द हार्ड फैक्ट, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, तो आप अगर ग्रुप में कहीं पे बैठे हो तो आप वहां पे बोल सकोगे कि भाई यस या वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड या आई डू हैव नॉलेज फॉर द सेम। अदरवाइज यू विल गाइस फील inferior. Anyway, I am sharing that video with you. Please be online. Making of Reliance Industries Limited, world's biggest greenfield refinery. Please be online. अगर बीच में कहीं पे मेरी आवाज ना आए, मतलब ऑडियो अगर आपको ना सुनाई दे, वीडियो अगर ब्लर हो जाए या फिर कनेक्शन कट हो जाए, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बताना। चैट में टाइप करोगे तो मैं वो देख नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो प्ले हो रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। ओके सर। हाँ, चैट में मैं देख नहीं पाऊंगा। एंड अगर मैं रिस्पॉन्स ना दूं तो आप मुझे क्योंकि वीडियो में ऑडियो मेरा भी ऑन होगा, तो शायद आपका वॉइस मुझे ना सुना दे, ऐसा कुछ हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, आई एम शेयरिंग दैट, प्लीज बी ऑनलाइन। Impossible. They all said it was impossible. The largest in the world. Impossible. Completed in less than 36 months. Impossible. They all said it was impossible. The largest in the world. Impossible. Completed in less than 36 months. Impossible. Made in India by the Indians. Absolutely impossible. Yes, impossible. That's what they all said in 1996, and again in 1997, and 1998, and in 1999. The impossible made possible. The world's largest greenfield refinery, with a capacity of 27 million tons per year. Constructed on 7,500 acres of barren land in Jamnagar. The largest investment made at a single location in India. $6 billion US. 24,000 crores of rupees. Reliance Petroleum Limited. Impossible. Quite impossible. What Jamnagar has demonstrated unquestionably to the world is, if we can dream it, we can do it. With my father, Dhirubhai Ambani's vision really is, and what is imbibed in each one of us, that whatever you do has to be world class. This is what it looked like at the beginning. Bare as bare can be. The project site before construction started. Meetings in London, Chicago, Mumbai, and Jamnagar. Then, in November 1996, the Reliance workforce moved in. 75,000 workers. Project management by world leader Bechtel. The finest technology from global giants. Massive machinery. The stage was set.
all set for the making of the world's largest greenfields refinery. 14,000 kilometers of cable, twice the coastline of India. 5,000 kilometers of pipeline, twice the distance from Mumbai to Calcutta. 100,000 metric tons of structural steel, enough to construct 16 Eiffel Towers. 170 kilometers of roads, enough to connect Mumbai and Pune. Concrete, equal to several Empire State Buildings. 55 substations, 33 blast-proof buildings, 43 chimneys and flares, the tallest, twice the height of the Qutb Minar, housing for 75,000 families, site offices for 4,500 people, 4 bonded warehouses, the world's largest and most modern pipe fabrication facility, the Crafts Training Center for developing skilled work people, and for total communication and coordination, India's largest and most modern IT network. It was all so perfect, everything running to schedule. Early trials and plant simulations underway. Everything running just like clockwork, almost perfectly timed. Till that day in June 1998, when, like a time bomb, nature exploded. Officials in India say that 550 people died in the cyclone that hit the western state of Gujarat on Tuesday. Many people are still missing. The army has been drafted in to help with rescue work. Millions of rupees worth of property reduced to rubble. And among the worst hit, Reliance Petroleum, the world's largest greenfields refinery, scattered by the winds of calamity. Overnight, people were mobilized from everywhere. People from all over India coming together. Employees, laborers, and contractors. Working 24 hours a day, every single day, to save lives first and foremost. And then to put the world's largest refinery back on schedule again. What happened on June the 9th was described as the act of God. What followed in the next 2 weeks were the acts of men and determined to bring the normalcy back as soon as possible. The result, the Reliance complex was back to the pre-cyclonic stage in a record 12 days. Just 12 days, that's all. And in another 15 days, 60,000 people back at work. What followed was history in the making. November 1998, the first gas turbine commissioned for uninterrupted power supply. December 1998, the first desalination unit commissioned, transforming seawater to fresh water in millions of gallons. March 1999, the first process unit commissioned. July 1999, first crude unit started. And marine unloading begins at India's largest all-weather deep-port petroleum terminal. September 1999, the fluidized catalytic cracker commissioned. And in December 1999, history. The world's largest greenfields refinery was commissioned in a record time of less than 36 months. All set to create wealth for the nation and the world's largest family of shareholders. At Jamnagar, we have really doubled the entire Reliance group.
in 2.5 years. In 20 years, Reliance has built $6 billion of assets at Naroda, Patalganga and Hazira. And in the last 2.5 years, we have doubled it. Take a look for yourselves. See what can be achieved with hard work, determination, planning, and total dedication. India's largest tank farm, with tanks larger than football stadiums. The world's largest coker. The world's largest paraxylene plant. All part of the vast Reliance Petroleum Complex. A world-scale refinery in India. A project with a mind-boggling combination of features unprecedented anywhere. Vision. Total backward integration. Maximum value addition. A world-scale, world-class refinery built in India. Reliance Petroleum Limited. A gift to the nation for the new millennium. An industrial wonder, the like of which has never been experienced before. During a startup, you sometimes face certain problems where a small problem could stop you from starting up the complex, even if it is $100 worth, but it stops you from starting the complex. We flew the gasket from Chennai to Jamnagar on a chartered plane. We needed it badly to start up the unit. Configuration. Versatile, adaptable, producing petrol and diesel, ready to respond immediately to changing market conditions, different grades of crude and customer demands at the press of a button. Quality control, uncompromising, meeting Californian standards. Size, world scale. More than 1/3 the area of Manhattan, or pictured in the city of Mumbai, extending from the gateway of India to Shivaji Park, an area of over 7,500 acres. Massive, yet so well connected. A perfect integration of refinery, petrochemicals, and power. Fully computerized and automated to respond to real-time business in a dynamic world. We wanted a refinery that could make the most amount of money under any circumstances, whether the refining scenario in India is regulated or deregulated. Tomorrow, if the government comes up with a ruling that in India there shall be 50 parts per million sulfur in diesel, our refinery should be able to meet the specification. So we wanted to build a refinery that would swing anyway, depending upon the changing market dynamics, whether the crude prices or product prices go up or down. In short, what we wanted at Jamnagar refinery was a giant that would dance to our tune. Now let's take a quick look at the other aspects that made it possible to create this industrial wonder. Execution strategy. Fast-track schedules with just 2 points of coordination and decision-making. London and Jamnagar. Real-time communication by satellite. Drawings in 3D with PDS model rendering for simulated plant walkthroughs before construction. Decision-making delegated at lower levels without sacrificing integrity. Global sourcing and bulk buying of material for the best possible quality at the lowest possible cost. One of the ways Mr. Mukesh Ambani was monitoring our project progress was to check how much money we spent in a day. For example, we were supposed to spend about $10 million every day. That is equivalent of rupees 44 crores. And if we didn't spend that kind of money every day, he wanted to know why there was a deviation from the plan and how can he help us to conform to the plan. If we did better than the plan, there were absolutely no questions asked. We have divided the project into 4 parts.
refinery, petrochemicals, power, and port. So for us, it was 4 projects to be financed and not 1 project to be financed. So that is how the entire funding was thought through and planned. Precise and quick decision-making was the order of the day. Take the Ro-Ro jetty, for example, specially constructed for the handling of huge, over-dimensional consignments of more than 1,500 tons. A single wrong decision in the handling of this project could have delayed it by as much as 2 years, costing several crores of rupees. Everything had to be precisely and meticulously planned. Nothing left to chance. Nothing. Not even the smallest details. 75,000 people, including 2,500 engineers, working at peak moments to maximum efficiency. Construction spread over 7,500 acres, divided into regions, subdivisions, contractors, and subcontractors, with Reliance itself becoming the main contractor. The moment we decided to put the refinery up, the first thing I was worried about is how am I going to get all these people? And we knew we have got no choice but to get people from all over the world. And therefore infrastructure received the first attention. We had a problem in recruiting some people. But when they visited the site, they saw the size of the project and they saw the infrastructure, we knew we got it. Well, you've seen it all. The making of the world's biggest greenfields refinery. But what you haven't seen is the other side of Reliance. The Reliance that cares for its people. Not just its loyal family of shareholders, but also the people who work for Reliance. In fact, this whole subject is so personal and so close to our hearts. We thought it needed a more personal approach, don't you? It started with Mukesh being gripped by this Jamnagar fever. So I came here. All that I saw was just land, miles and miles of land, no trees, arid desert. He said, "Do you think you can help me in putting up this township?" This is how it started. I dreamt of having gardens everywhere. I said, I don't want just concrete and buildings. I want the family to enjoy complete life. The largest, greenest, most beautiful township. Schools. Community halls. Recreation centers. The finest medical facilities, complete with modern hospitals and ambulances. Supermarkets run by the Employees Cooperative Society. Bus services. All the facilities are so good कि बच्चे तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते. Everything a housewife and her children could wish for. Everything to make the Reliance family feel at home at the world's largest greenfields refinery. Environment. More than 1,900 acres of greenery planned. A lush green belt on barren land, using the latest agroforestry and horticulture. A totally self-sufficient project. Reliance Petroleum Limited. A project that will contribute more than 7,000 crore rupees to the national exchequer. A project that will save the nation around 8,000 crore rupees every year in precious foreign exchange. A project that will generate several million jobs in direct and indirect employment. A project that will account for 4% of the total turnover of the Indian corporate sector. The single largest investment ever made at a single location in India. A group investment of 24,000 crore rupees.
the world's largest greenfield refinery. Reliance Petroleum Limited. So guys, have you seen this video? The entire video, making of Reliance Industries Limited. Am I audible to you guys? Yes, sir. Okay, yeah, thank you. So how's that? कैसा लगा वीडियो आप लोगों को guys? Practically that matters a lot. बुक्स में हम देखते हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजी ऐसी होती है, ये इस हिसाब से होता है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, एंड मेनी मोर थिंग, मैनेजमेंट ऐसे होता है। जनरली आप लोगों ने और मैंने भी ऐसा ही सुना है कि मैनेजमेंट जो है वो ऑलवेज मनी ओरिएंटेड होता है कि भाई जितना हो सके उतना स्पेंडिंग आपको कम करना है। बट यहाँ पे रिवर्स केस था, आपने देखा है, अगर आपने सुना है तो कि भाई मुकेश अंबानी ने बोला था कि डेली 45 करोड़ रुपीस तो आपको स्पेंड करने ही है। अगर वो नहीं होते देन यू आर आंसरेबल कि भाई ये स्पेंड क्यों नहीं हुआ। उनसे ज्यादा करते हो देन इट्स फाइन, बट मिनिमम 45 करोड़ रुपीस तो आपको स्पेंड वहां पे करने ही है। Yes, Kamlaj has answered innovative. Yes, corporate social responsibility, management, working and team building, really very good. ये नेचुरल वहां पे वो हुआ था, कैलेमिटीज हुई थी, एंड विद इन अ वीक फिर से सभी वर्कर्स ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा वर्कर्स जो है वो विद इन अ वीक वापस आ गए थे। अलग अलग टीम बुलाई गई थी, बैक्टेल, ड्यूपॉन्ट, ये सब जो है, ये सभी कंपनीज जो है उसका कहीं ना कहीं पे बढ़िया कंट्रीब्यूशन है रिलायंस को बिल्टअप करने के लिए। जो हम नेक्स्ट ये दो मॉडल हम पढ़ने जाने वाले, रिसोर्स बेस्ड मॉडल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, डायरेक्टली इसका कनेक्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। मैं आपको समझाऊंगा जब वो एक्सप्लेन करूंगा, तब पूरा रिलायंस को ध्यान में रखते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट नीता अंबानी इज डूइंग, इट्स रियली वेरी नाइस। आपको मालूम है रिलायंस इंडस्ट्री जो अभी वीडियो आपने देखा, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? यू गाइस वोंट बिलीव, आप बिलीव नहीं करोगे। एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्या होता है? सॉरी, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मैंगो का। मैंगो का इतना बड़ा बगीचा है वहां पे कि आप बिलीव नहीं करोगे। फ्रेश मैंगो, ऑर्गेनिक वन, यस, इन जामनगर इटसेल्फ ओनली। अगर आपके कोई सोर्सेज है तो यू कैन चेक इट आउट, यू कैन वेरीफाई। यूट्यूब पे आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे इफ पॉसिबल। मैंने सर्च नहीं किया बट मेरे को मालूम है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सभी स्टार्स, सभी पॉलिटिशियन, सभी के घर में ये मैंगोज जो है वो जाती है, एवरी ईयर एक्सपोर्ट होती है, इंडिया में कम आती है। मावा मावा मैंगो या फिर ऐसा कुछ उसे बोलते हैं, जिसका प्राइस जो है 2000 रुपीज पर केजी है। बट एकदम वो स्वीट रहती है, एकदम स्वीट, बढ़िया रहती है, नेचुरली ऑर्गेनिक बनाई जाती है वो पूरा। उसके स्टाफ को भी ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सर्टेन केसेस, बट इट्स रियली वेरी नाइस, इट्स रियली वेरी टेस्टी, आई हैड इट। हाँ, इट माइट बी पॉसिबल, आकाश अंबानी ने वो बोला होगा, इट माइट बी पॉसिबल। इट्स रियली, आई हैव टेस्टेड इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स रियली वेरी यम्मी एंड टेस्टी। एक बार वो मैंगो आप खाओगे तो दूसरी मैंगो आपको उसमें पानी कम चाय जैसा लगेगा, ऐसा हो जाएगा। इट्स रियली वेरी गुड। प्लीज बी ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
So guys, this is the this is the entire video of making of Reliance industry, and we are going to discuss the same with the upcoming content of our subject, resource based model and industrial organization model. I hope you guys take my suggestions and advice in positive manner, and also spread the same to your classmates who were absent in today's session and those who have joined late. Please, I request you to spread the good news with them too. I request you to create a kind consent so that they can participate in the session. They love to be interactive and share the things because sharing is caring. So, guys, today we'll keep up to this only. That's it for the day. Thank you so much. Enjoy your day. Take care.